Himmat Shah. I have known Himmat for close on 40 years, and he continues to be one of the most singular personalities in contemporary Indian art, unique in many ways, even though the Indian art scene in the last 40 years has changed enormously. We stayed together maybe for 8-9 years, and not one day or not for once we had any fights or any uneasiness or any differences about anything, And that's a rare thing in any relationship. Even between the husband and wife, if you love each other a lot, still there are moments, when you disagree and you have tension and there's ego problem. We didn't know what ego was between him and me. It's important to situate Himmat's development as an artist, or his emergence as an artist, in the Group 1890. Group 1890 was formed in the early 60s. They had one exhibition, one major exhibition, but which was the only exhibition, which made them in fact enter Indian art history in a very important and volatile sense. The catalogue essay was written by Octavio Paz, the then Mexican ambassador to India, but a major writer and poet in his own right.
to be able to explore a contextual modernism, to be able to root modernist language within the aesthetic that is a part of the living environment of the artist. And Himmat is probably a prime example of an artist able to do this amazing act of working with contradictions and finding an aesthetic out of it. ब्यूटी तो आप खुद ही देखते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारी देखने की क्षमता में ही कला। कला आप कैसे ढूंढते हो? कला उसका कोई शाश्वत है नहीं। आपको जो सुंदर लगे दूसरे को असुंदर भी लग सकता है। बहुत लोग हैं दुनिया में, अपनी बात ये उठती है कि कितना लोग हैं जो सुंदरता देखते हैं, बहुत कम लोग हैं। फिर जो लोग सुंदरता देखते हैं वो जिसको ये बात अंदर से उठ गई कि बड़े सुंदर हो, वहाँ व्याकुल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, वो देखते रहते हैं, तो सुंदरता देखते देखते इतने उसे अभिभूत हो जाते हैं। तो फिर जो आर्टिस्ट होते हैं उसको उसके अभिव्यक्त करने के लिए साधना करते हैं। तो जो साधना करते करते फिर वो अभिव्यक्त कर देता है, तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है।
But the fact remains that he's the only creative artist of his kind, which is unlike everybody else in every way. And all of us, we go out, we meet people, we go to parties, which he doesn't do. So he's stayed unpolluted, pure mind. And his life has been very tough. But through that toughness and purity, what he's been able to create today is very pure personal art form. Perhaps his greatest contribution in the past several decades has been his use of clay. Has to do with probably his beginnings within a rural environment, and his continuing attachment to making of objects within a folk life, within a village life, which would include ritual objects, use objects, and objects also for pleasure and play. I would like to call this language that Himmat uses very strongly modernist language. The modernist language developed in various parts of the world, and Himmat understood that very early on and has in fact made that the very basis, the very aesthetic and the very language with which he has worked for these many decades. ऐसा मैं स्कल्पचर शुरू करूँ तो मेरे से नहीं होता है, पर स्टूडियो में कोई सफाई करता हो, रखता हो, औजार ढूंढता हो, उसमें शुरू हो जाता है, क्योंकि डर लगती है होगा कि नहीं होगा, समझ गए ना? वो बड़ी फीलिंग है, वो होगा कि नहीं होगा, वो फियर से शुरू नहीं होता है, पर लग जाओ तो फिर कैसे होता है पता नहीं, ऑटोमेटिक चले जाते हैं। मॉडर्न सोसाइटी को मैं उसको कहता हूँ जो आज की प्रेजेंट को सोचता है और इसे करना चाहता है। मॉडर्न सोसाइटी में उसको कहते हैं आज ही अभी जो सच्चा लगे वो करे, उसको फरे, उसको ही मैं मॉडर्न कहता हूँ। इसलिए मैं आर्ट में कहता हूँ आज के संदर्भ में आर्ट क्या है वही मैं ढूंढता हूँ। पहले मैंने कुछ वन पेपर कोलाज किया थे, वेरी एब्स्ट्रैक्ट, नोबडी अंडरस्टूड, तो उसमें एक अजीब स्पेस थी। फिर मैंने हेड बनाया और उसमें होल का ऐसे स्पेस मैंने क्रिएट किया, इधर होल ने लाइन में आते। तो जब करते करते मुझे लगे थे मेरा एक्सपीरियंस, जब मैं छोटा था तो हमारे दोस्त लोग चलो अब तालाब में पानी आ गया है तो हम तैरने को जाते हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो तैरना आता नहीं, तो चलो कि हमारा हाथ पकड़े चलो। तो तालाब के बीच में कुआं था, कुआं का कांटा था, उसमें बिठा दिया मेरे को, और जो तैरना जाते कुआं में जंप लगा तो, और सबका हेड नहीं करता वो देखता था। अब किसी ने सोचा होगा कि मुझे भी तैरना, किसी मुझे धक्का मार दी तो मैं भी कुआं में गिर गया। तो बाहर आके फिर मैंने जंजीर पकड़ी, तो मैंने कहा ये तो मैं कर ही सकता, तो मुझे तैरना आता ही था, ऐसा हो गया मैंने सोचा। तो फिर सब पानी में सबका हेड नहीं करता था, तो बार बार ऐसा एक सिंपली हो जाता था, वही हेड की इफेक्ट मेरा वर्क में मुझे लगती है। तो फिर मेरे जब तालाब सूख जाता था तो ऊपर टिटोड़ी चलती थी, कीड़े मकोड़े चलते, तो एक लाइन आ जाती थी हाथ। तो ये सब मेरे हेड में मैंने यूज़ किया इसे, और मुझे पता नहीं फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पहले का एक्सपीरियंस ही आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि नया एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं, पर मुझे जो कुछ 10, 12, 15 साल के जो एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस मैं जी रहा हूँ। The uniqueness comes from not just the fact that his work has had a consistent stylistics over this long period and a formal unity, but from the fact that his life and his work have had such an extraordinary integration. And that is the rarest thing, because otherwise we are all viable, sellable people,
and we know what commodity sells, And he's lived beyond that, and now people will get to see. And this I want to emphasize because not many artists, perhaps some artists of his own generation and the generation immediately before it, would have aspired to this kind of integration between life and work, but perhaps not many have been able to live it through to this day. And Himmat is one of those selected number of artists on the Indian art scene. बड़ौदा से अहमदाबाद चला गया था। मैं 55 टू 61 दिसंबर तक बड़ौदा रहा। दिसंबर की शाम को ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में किसी ने भाव नहीं पूछा, नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हमारा एक दोस्त जाता था दिल्ली, तो कि तेरे को चलना, मैंने कहा मेरे पास पैसा उससे टिकट, तो कि मैं अभी जा रहा हूँ, तो मैंने टिकट नहीं, तो कि मैं ले रहा था, पहने कपड़े उसके साथ बैठ गया। और 62 जुलाई में दिल्ली उतरा, फिर कॉफ़ी हाउस में गया, स्वामीनाथन सब मिल गए, अंबादास आते, तो अंबादास के तुम मेरे साथ रह सकते हो। And he has continued in a sense with that kind of solitude. So whereas he lives within a community of artists in the Gadi studios, he's lived for 2 decades in the Gadi studios amongst other artists, there is always around him an aura of being solitary. And he carries that as gregarious as he is, the great famous laugh of Himmat Shah being what it is, he still carries the aura of being a person alone, a singular person. स्कल्पचर ने क्या सिर्फ फॉर्म ही है स्ट्रॉन्ग, तो मैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म ढूंढना चाहता हूँ। The way he speaks obsessionally about form. In every conversation he will speak about the formal qualities of the object. Now this is an eminently modernist approach. जितनी मैं रेडीमेड ऑब्जेक्ट देखता था उसमें कुछ स्कल्पचरस क्वालिटी, कुछ मॉन्यूमेंट तो मुझे असर करता था, तो मैं मार्केट में जाता था, खरीद लाता था, रखता था। तो कुछ दिन के बाद कुछ चीज़ रिजेक्ट करती थी मेरी आँख, मेरा बॉडी के क्या है, तो फेंक देता। जो अपील करती थी वो रखता था। फिर उसका मैं पीस बोल लेता था प्लास्टर में, फिर सिर्फ का से मिट्टी में कास्ट करता था, फिर उसको ऐसे पका के देखता था क्या हुआ। तो मटेरियल चेंज होने से वो ग्लास की है कि लोहे की है, पर आई विल मेक मोल्ड एंड कास्ट इन क्ले, स्लीप कास्टिंग से, तो एक डिफरेंट बात आ जाती थी। He has wished to bring to his work the kind of obsessional concentration, and the work itself has had a kind of condensation of all his understanding of modern art history, of the traditions of art from India, which includes both great classical art as well as village arts, particularly works done for ritual purposes in the folk and tribal traditions, to which he is greatly attracted and to which he is attached. मैं एक फॉर्म डिसाइड करता था, फिर उसमें से मैं 4-5 स्लिप कास्ट निकालता था, फिर उसमें कुछ ऐड करता था, निकालता था, क्ले के अंदर गीला गीला हो तो ऐसा डेवलप करता था। फिर मैंने कास्टिंग करके ये देखा कि उसमें एक सॉफिस्टिकेशन आता था क्ले का, और क्ले को बहुत रिफाइन करना पड़ता था। तो वर्क आप कर थोड़ा सॉफिस्टिकेटेड हो तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये वो
as the market closes in upon an artist in India, he finds a way of moving out of it by, for example, moving away from Delhi to Jaipur, for the reason that he has a foundry where he can now cast his sculpture in bronze. And as he says, he would like to work towards the peak of his life, or what he calls the end of his life, with monumental bronze sculptures, where for years he made the tiniest, the most delicate, the most breakable and fragile objects in clay. Himmat has made himself into a figure and a persona. He's developed, he's very carefully nurtured a persona which is like a modern day hermit, but surrounded by friends and admirers, able to live without selling his work in some form or other, able to survive. मुझे मालूम है कि आपका काम इतना नहीं बिकता था और अब आपका काम इतना बिक रहा है, तो अब आप क्या अनुभव करते हैं, ये बताइए ना। अभी इतना बिक नहीं रहा है, पर अभी ऐसा लगा कि आज तक तो मेरे पास पैसा नहीं आता था, पर आज मैं कुछ भी मटेरियल खरीद सकूँ. Rather than romanticize the fact that he has lived at times in a state of near poverty, one would like to say that he has also with as much ease been able to negotiate and to live within an art scene in India which is now very market driven. कि सारी जिंदगी में मेरा काम ही करता रहा, तो दुनिया के अंदर कैसे बिहेव करें, अकेला रहता हूँ, अकेला खाता हूँ, अकेला पकाता हूँ, करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इनह्यूमन हो गया हूँ. ये एक सच बात है. हिम्मत जी का एक अपना बनाया हुआ स्पेस है, उस स्पेस पे कोई अंदर जा ही नहीं सकता, कवर करके रखते हैं वो स्पेस को, उधर किसी को भी एंट्री नहीं है. ये बात हिम्मत जी रहते हैं उसमें. वेरी गुड. But I think it has also to do with the kind of self-image that has been very carefully honed in 20th century art by the artist. Good morning, sir. कैसे हैं आप? The solitary artist, the self-sufficient singular artist whose life and work are completely integrated, whose studio is their home. And perhaps no other artist in India has in actual fact made the studio a home and the home a studio. And for years, one has always seen Himmat surrounded by his own work, in the process of work, which includes cooking and which includes the daily chores. इसमें कोई सेट थिंग नहीं है, वेरी स्पॉन्टेनियसली इज डूइंग एंड वेरी स्पॉन्टेनियसली द होल थिंग अगर प्रकट होती है अंदर से. और जो प्रगटीकरण है, जैसे आत्म प्रकट हो गई इसमें, तो इतना 50 साल से करते 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 इट हैज़ बिकम हिज सेल्फ हैज़ बिकम हिम्मत एंड हिम्मत बिकम हिज वर्क, द वर्क बिकम हिज सेल्फ. ये कॉन्शियस ही कैसे तादात्म्य करता है, ये वो देखना चाहिए. पर उसकी चेतना को जो एक अनुभूति, एक जो अनुभव होता है, जो
एक सौंदर्य की वजह से जो उसके अंदर जो एक आनंद उठता है, वो आनंद एक एनर्जी पैदा करती है, वो एनर्जी उससे क्या करवा लेती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारा खेल ऊर्जा का ही है, और आशयहीन ऊर्जा का खेल कला है। जब आशय होती है तो दुकानदार आ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं ये आँख है, आपकी सारी इंद्रिय रिफ्लेक्शन का काम करती है। आपकी जो तीसरी आँख खुले तभी आप सकते, क्योंकि शरीर के पिंजरे में आप बंद हो। पर जो चेतना जब देखते तो शरीर का पिंजरा नहीं रहता है, फिर तुम्हारी एनर्जी ऐसे उठती है, तुम एक सारा ब्रह्मांड का ही हिस्सा होते, आप अलग नहीं होते। एट दैट टाइम यू फील यू आर अ क्रिएटर, यू आर लाइक ए गॉड। वास्तव में क्या, मैं कुछ करता रहता था, लेकिन मैंने कभी स्कल्पटर बनने का, आर्टिस्ट बनने का निर्णय नहीं सोचा नहीं था, पर मैं करता ही रहता था। पर मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि आज भी मैंने अभी स्कल्पटर बनने का निर्णय नहीं लिया है। आई वांट टू कीप टोटल फ्रीडम फॉर मी। सो कल थॉमस का स्टूडियो बोले छोड़ के मुझे जाना चाहिए तो मैं जा सकूँ यार। so, नहीं, तो आई वांट टू कीप टोटल फ्रीडम फॉर मी। सो ऐसा